space would be 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 possible outcomes which we can have. Now, let's say if I ask, okay, what is the probability of getting a prime number, right? Let's make an event A, getting a prime. So if I ask getting a prime number is an event, so then there will be 3 possible outcomes, 2, 3, 5, right? Now, the probability of getting A, event A, that is getting a prime number, should be the favorable cases, which are 3, divided by total cases, which are 6, which should be 1 by 2. Okay. But let me make another event, getting a number less than 3, getting a number less than 4. So if I say getting a number less than getting a number less than 4, the possible outcomes are 1, 2, and 3. I mean, the favorable outcomes are 1, 2, and 3. So probability of B would be again 3 by 6, which would be 1 by 2. So what does conditional probability do is, conditional probability can actually put a condition while finding a probability. So if, let's say I ask in the previous question only, if I ask P A by B, first of all, what does that mean is, P A by B means is probability of A, the probability of event A when B has already happened. Means that B event has already occurred. B event has occurred. Now, if B has occurred, what is the probability that A will occur? Very simple. I mean, if I just am I audible? Sure, am I audible? Yes, sir. So if I say P A by B, what does that mean? We want to find the probability of getting a prime number, because we have already defined A and B in this case. Probability of getting a prime number if we already got a number less than 4. Means that when we were calculating PA, means we just want to find out the probability of getting a prime number. But when I say PA by B, first of all, this is the concept of conditional probability. हमेशा यहाँ पे आपको A by B, B by C कुछ भी इस तरीके से दिया जाएगा, एक इवेंट न्यूमरेटर में, एक इवेंट डिनोमिनेटर में. Whatever event is written in the numerator, that we have to find the probability for, and whatever event is written in the denominator, that has already occurred. तो B इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, A इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है. A इवेंट कहता था गेटिंग अ प्राइम नंबर, B इवेंट कहता है गेटिंग अ नंबर लेस देन 4. तो मुझे निकालना है कि अगर लेस देन 4 नंबर आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइम नंबर आएगा. नो, लेस देन 4 में मेरे पास प्राइम नंबर है 2. लेस देन 4 के केस में मेरे पास जो फेवरेबल चॉइस बचेगी प्राइम नंबर्स की, वो सिर्फ 2 और 3 बचेगी. नंबर 5 भी प्राइम नंबर है, बट वो हमसे कह रहे हैं कि ऑलरेडी नंबर 4 से छोटा आ चुका है. इफ द नंबर इज ऑलरेडी लेसर देन 4, देन 5 कैन नॉट बी दैट नंबर. सो मेरे पास फेवरेबल इवेंट जो है वो है 2 and 3, और जो पॉसिबल इवेंट्स हैं, सो दीज आर फेवरेबल इवेंट्स फॉर दिस केस, sorry, favorable outcomes for this case, rather I should say. And if I consider all possible outcomes, these are 1, 2, and 3. All possible outcomes was 1 to 6. But इस केस में क्योंकि वो कह रहे हैं कि B ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि नंबर जो है वो तो 4 से छोटा ही मिलेगा. तो 3 पॉसिबल चॉइसेस है, 1, 2, 3. बट उसमें से मेरे को प्राइम नंबर मिलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ. So that means the probability of A by B should be 2 by 3. यानी कि अगर आपको नंबर 4 से छोटा मिलता है तो नंबर प्राइम होगा
इस बात की प्रोबेबिलिटी है 66%, 2/3. So that is how the probability, the conditional probability works. एक इवेंट हो चुका होगा, दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा. तो ये तो एक बहुत बेसिक से एग्जांपल था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. Yes, sir. Okay, can I remove this? You can't try it, right? You told me earlier. Yes, sir. I'll take screenshot. Yeah, sure. So now coming to the formula part, how does this work? So if I am calculating P A by B, let's say A and B are two events, and if I want to calculate, I can calculate it using the formula P A intersection B divided by PB. Or rather, I can also use number of elements in A intersection B divided by the number of elements in B. That is the elements common to both of events divided by number of elements in the event that has already occurred. यही exactly हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे जो दोनों इवेंट में, सॉरी, ऐसे आउटकम्स ढूंढने पड़ेंगे जो दोनों इवेंट्स में ऑलरेडी हो चुके हैं. तो देखो पिछली बार हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स थे वो थे 2 and 3. वो ए का भी पार्ट थे और वो बी का भी पार्ट थे, यानी कि वो प्राइम नंबर भी थे और वो 4 से छोटे भी थे. जबकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 1 2 3. किसने डिसाइड किया? जो भी आपका दूसरा इवेंट होगा, जो भी डिनोमिनेटर वाला इवेंट होगा, वो आपका सैंपल स्पेस डिसाइड करेगा. यानी कि टोटल आउटकम्स जो होंगे आपके वो डिसाइड होंगे ए बाई बी. अगर लिखा हुआ है तो जो भी डिनोमिनेटर में इवेंट है वो आपका टोटल आउटकम्स डिसाइड करेगा. और जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इंटरसेक्शन होगा, यानी कि ऐसे आउटकम्स जो ए के अंदर और बी के अंदर दोनों के अंदर आ रहे हो, वो आपका फेवरेबल आउटकम्स होगा. So using this formula, we can calculate conditional probability. P A by B is probability of A intersection B divided by probability of B, या फिर number of elements in A intersection B divided by number of elements in B. Let's solve some questions. This is the first formula for probability. मतलब 12th का probability जितना भी होगा उसमें हमारे पास should be the first formula. Now if you have NCRT, you can open that. Otherwise, I would also write the questions. No worries. So first formula is, oh sorry, first question 13.1 exercise. काफी easy है conditional probability, बहुत easily हो जाएगा. तो so it's already written कि आपको कुछ चीजें दे रहे हैं. उसने हमें बोला कि probability of E है 0.6, probability of F है 0.3 and probability of E intersection F है 0.2. He wants us to find probability of E by F and probability of F by E. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ये तो फॉर्मूले की एप्लीकेशन वो जानना चाहते हैं, नथिंग फैंसी. So if I write probability of E by F, so using the formula I can say this should be probability of E intersection F divided by नीचे वाले का probability, which is F in this case. I know P intersection F, which is 0.2. I also know this 0.3, so it should be 2 by 3. Similarly, if I have to calculate PF by E, I can calculate it using the same formula. Just the denominator will change because this time E is the event that has already occurred. So it will be the sample space. So it will decide the total number of cases. So this should be 0.2 divided by 0.6. In this case, it should be 1 by 3. बहुत ही सिंपली तो अपना बस फॉर्मूला अप्लाई करना हो चाहता था. आर यू प्रिपेयरिंग फॉर जेई ऐश्वर्या?
Aishwarya, are you preparing for J? Yes, sir. My net is very bad, so I can't hear you properly. Okay. Acha, okay, your network is bad. Yeah, mine is working fine actually, I think. Okay, so we'll solve actually some good questions also. These are very basic. But let's solve one question. Yeah, cool. In that case, we'll work on some good questions as well. तो कंडीशनल तो इज वेरी इजी. कंडीशनल में तो बस हमें इतना ही चेक करना होता है, एक कंडीशन हो चुका होता है, मतलब एक कंडीशन लगा दी जाती है प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले, बस इतना ही है. एंड दैट कंडीशन इज जो भी डिनोमिनेटर में इवेंट लिखा होगा, यानी कि वो हो चुका है ऑलरेडी. तो वो हो चुका है तो आपके पास जो टोटल केसेस बनने होते उतने नहीं बन रहे होंगे. जैसे कि हमने डाई वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा, टोटल केसेस 6 होते हैं, बट अगर कोई इवेंट हो चुका है तो वो आपके टोटल केसेस डिसाइड करेगा. जैसे कि लेस देन 4, वहां पे उसने बोला था कि लेस देन 4 नंबर मिलना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के लिए हमने डिसाइड किया कि बी हमारा आप सैंपल स्पेस डिसाइड करेगा बस. दैट इज हाउ इट विल वर्क. ओके, जस्ट ट्राई दिस. ओके, यू हैव टू मैं बताता हूँ क्या कैलकुलेट करना. फर्स्ट कंसिडर दीज टू यूनिट्स. हमने क्या किया है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. एक इनिशियल कंडीशन में दे रहा हूं, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. यू हैव टॉस्ड अ कॉइन 3 टाइम्स. कैन यू टेल मी द total number of possible outcomes? If I toss a coin 3 times, what will be the total possible outcomes? Okay, if I toss a coin 1 time, तो हमारे पास आउटपुट क्या क्या होगा? If I toss a coin just 1 time, what are the possible outputs? Shreya, can you hear me?